Hi guys. So now 4 days to go for RBI Grade B Phase 1 exam, and I hope that your preparation is on full swing now. Revisions are going on, MCQs are being practiced, and that is all you need at this stage. And don't worry, I'm not going to teach you anything in this session right now. All I'm going to share with you is a checklist. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पक्का ही करनी होती हैं, तो ऐसी ही कुछ चीजें, ऐसी ही चेकलिस्ट लेके मैं आया हूं फॉर जर्नल अवेयरनेस दैट दीज थिंग्स यू मस्ट शुड हैव डन बाय नाउ. नहीं किया है तब भी कर लीजिए, थोड़ा जो टाइम बचा है उसमें दीज आर इजीली मैनेजेबल. तो चेकलिस्ट में आपको आई विल बेसिकली टेल यू इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है, कि स्टैटिक जीए में क्या चेकलिस्ट है, कौन से टॉपिक्स हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स में एंड अदर करंट अफेयर्स में. बिकॉज इफ आई डिवाइड जर्नल अवेयरनेस आई कैन डिवाइड इट इनटू 4 pillars like this. So we will discuss all these areas one by one. If I talk about static GA, so static GA is very vast, but we have been telling you again and again that do static GA which is related to your current affairs, which is derived from your current affairs. ठीक है, तो उस एंगल से आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, दो द लिस्ट हियर कैन बी वेरी लॉन्ग. For example, Russia Ukraine war. I mean, that's the news that has been going since the past 4 months. You must be well versed. The capital of Ukraine, capital of Russia, currencies of these countries, and all other things related to these countries, the continents they belong to. तो उससे related static GA का question आ सकता है. Then another example is, for example, elections were held in the state of Punjab, Uttar Pradesh, and other states. So you might be, or you should be knowing that how many constituencies or how many legislative assembly seats are there in these एरियाज. जो चीफ मिनिस्टर है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको जितनी भी न्यूज है करंट अफेयर्स की उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीए आपको पता होनी चाहिए, राइट. डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट स्टैटिक जीए. It is one of the most scoring portion. Now coming on to the banking and financial awareness, guys, here the checklist as in the areas that you need to do is RBI notifications, and one RBI notification from which I'm sure there should be a question. अगर नहीं आता है तो मुझे बहुत दुख होगा. दैट इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई. आई मीन मुझे तो बहुत उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए, विच इज अ सिंपल स्कीम. यू शुड ऑलवेज बी रीडिंग अबाउट दिस. बट बाकी आरबीआई नोटिफिकेशंस भी पढ़ लीजिए पिछले एटलीस्ट 5 to 6 months, स्पेशली द वंस विच आर रिलेटेड टू कॉमन मैन, विच इम्पैक्ट्स द कॉमन मैन. ठीक है, नेक्स्ट इज जी मर्जर्स ऑफ बैंक्स एंड ऐप लॉन्चेस बाय बैंक्स. दीज न्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, नाउ banks to be merged with Punjab National Bank or Oriental Bank of Commerce and यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. इस तरह बहुत सारी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुई हैं पिछले 6-7 महीने में. यू शुड बी वेल वर्स्ड विद देम. Then app launches is another area which is asked in the exam. For example, in April, Union Bank launched super app uh, Union NXT. The name is Union NXT. So these kind of questions are also asked in the exam, especially the app launches by the banks. ठीक है. Apart from that, news related to PSBs, any milestone has been reached by any public sector bank such as SBI, those are also important. And do not forget to practice or revise union budget and economic survey. So this is about banking and financial awareness. I expect around 20 marks of paper from here. So please 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 ये चेकलिस्ट आई होप आपने देख ली है. कुछ रह गया है तो उसको कर लीजिएगा. Reports and schemes is another area which contributes around 20 marks to your exam. तो schemes बहुत ज्यादा है. सबसे पहले हमें स्कीम्स में बहुत अंदर नहीं घुसना है, बिकॉज इन दिस एग्जाम फेज 1 में थोड़ा बेसिक लेवल पे ही पूछा जाता है. बट वी ऑलवेज सजेस्टेड यू टू रीड स्कीम्स इन डिटेल बिकॉज इन फेज 2 दे विल आस्क यू इन डेप्थ क्वेश्चंस. सो दीज आर द एरियाज: एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, देन अंडर प्रिविलेज क्लासेस लाइक पुअर पीपल, ऑर्फन चिल्ड्रन और चिल्ड्रन, डिसेबल्ड पीपल, फार्मर्स. इनके बारे में जितनी भी स्कीम्स हैं दैट आल्सो यू शुड बी वेल वर्स्ड. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्कीम्स जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं, बट इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, 90% ऑफ द टाइम्स द रिपोर्ट्स दैट दे आर आस्किंग इन द एग्जाम आर रिलेटेड टू big international bodies or important bodies in India. Like अगर मैं इंडिया की बात करूं तो नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो IMF, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, OECD, इनकी रिपोर्ट्स के ऊपर ही ज्यादा पूछा जाता है. और वो रिपोर्ट्स भी आपके इसी सिलेबस से रिलेटेड होती हैं, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, विमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स को पढ़िए और उन्हीं टॉपिक्स पे रिपोर्ट्स पढ़िए, दोज आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो ये जरूर कर लें, ठीक है। Now coming to other current affairs which are like common banking, I always say it, like sports awards, books and authors, defense exercises, etc etc. The list is long here, but I am telling you only 5 important areas जिसमें से maximum questions आते हैं. The most important area is partnerships with government or international organizations. Any state government or any other organization, any company who forms a partnership with the central government or with any other international organization like UNICEF, UNESCO, for any issue within the state or within the country, that partnership becomes important. For example, Google basically entered into a kind of a MOU with MIT, which is the Information Technology Ministry, to help 100 Indian startups build high quality apps. Now, this is a kind of a partnership which is an important for your exam. तो ऐसी जितनी भी partnerships हैं corporates के बीच में या international organizations के बीच में, and the Indian counterparts can be Indian government, state government, or any other organization within India, that you should be thorough with. और कोई भी मेंबरशिप इंडिया ने ली है, किसी अलायंस का पार्ट बना है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Any setup of any logistic park, manufacturing hub, that can also be asked in the exam. And if there are any infrastructure projects launched by the government, that are important. Any courses which are launched by the government for skill development of the people, or any body that has been set up by government to oversee things, that also becomes important. Then summit, conferences plus themes is always important for your exam. For example, बिम्स्टेक समिट श्रीलंका में हो गया है, जो कि मार्च में होना था. आई एम नॉट श्योर वेदर इट हैपेंड और नॉट, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस काइंड ऑफ समिट कॉन्फ्रेंसेस एंड द थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंस में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज और इक्विपमेंट से. कुछ टेस्टिंग की है किसी मिसाइल की, किसी टैंक की, या कोई इक्विपमेंट बाय किया है, या कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैव बीन डन jointly with some other countries, that are important. For example, DRDO successfully tested Indian Army MRSAM missile. So these kind of questions can be asked in the exam. ठीक है. So I hope I've given you a fair idea of the checklist के last moment पे कुछ ऐसा ना हो जो आप बिल्कुल छोड़ के बैठे हो और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. I know आपने बहुत सारी जनरल अवेयरनेस पढ़ी होगी, and this time you might be thinking, सर अभी क्या बता रहे हैं, अब जो पढ़ना था पढ़ लिया है. I know, go with whatever you have read. ऐसा कुछ नहीं है कि यही पढ़ के एग्जाम क्लियर होगा, but still if you find that now something really important has been left from this checklist, और आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, तो please do that. Maybe that extra 3 or 4 marks that you're able to score after watching this video might make the difference. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye.